The MMA India Show. And I'm your host, Praveen Dabas, and this is Abhishek Singh, my co-host. बड़े दिन बाद आपके पास आ रहे हैं बात करने, और कार्ड भी बहुत बड़ा है, UFC 300, इसलिए बात तो करनी थी, राइट? जब तक लोग ज्वाइन हो रहे हैं, जब तक थोड़ी सी यहाँ वहाँ की बातें कर लेते हैं। राइट, सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि UFC 300 एक अमेजिंग कार्ड तो है ही, उसके प्रीलिम्स और अर्ली प्रीलिम्स भी बहुत अमेजिंग है, राइट? फ्रॉम द फर्स्ट फाइट ऑनवर्ड्स बहुत ही अमेजिंग कार्ड है। और ये आप पूरा का पूरा कार्ड जो है वो आप अंडर कार्ड भी देख सकते हैं। सोनी स्पोर्ट्स इंडिया में पूरा का पूरा कार्ड दिखा रहा है, इंक्लूडिंग प्रीलिम्स एंड अर्ली प्रीलिम्स। लेकिन मुझे एक चीज़ पूछना था, ये तो 300 में दिखा रहे हैं, एक बार पहले भी दिखाया था मेरे ख्याल से, जब अंशुल ने फाइट करा था 294। हाँ, तो क्योंकि वो अंडर कार्ड था। लेकिन अदरवाइज जो है वो जो अंडर कार्ड है वो सोनी लिव पे भी नहीं आता ना। नहीं, तो वो कहाँ देख सकते हैं? जो इंडियन फैंस है वो कहाँ देख सकते हैं? अनफॉर्चुनेटली कोई लीगल तरीका नहीं है देखने का। नहीं, लीगल एज एन अगर वो VPN लेके UFC फाइट पास पे आते हैं प्रीलिम्स? नहीं, UFC फाइट पास पे नहीं आता। एवरीथिंग इज नाउ शिफ्टेड टू ESPN प्लस, और अनफॉर्चुनेटली ESPN प्लस आप एक्सेस नहीं कर सकते VPN के थ्रू इंडिया में भी। ओह, इवन थ्रू VPN, राइट? आई थिंक बहुत रिस्ट्रिक्टिव है उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है। अच्छा, आई वांटेड टू से ये काफी स्टैक्ड फाइट कार्ड है, क्योंकि इस फाइट कार्ड को जो अर्ली प्रीलिम को स्टार्ट कर रहे हैं वो है डेविसन फिगरेडो और कोडी गारब्रेंट, बोथ आर फॉर्मर चैंपियंस। तो जस्ट दिखाते हैं कि एक्साइटिंग फाइटर्स। यस, सो आई थिंक डेना वाइट ने जो अनाउंस किया है कि $300,000 मिलेगा परफॉर्मेंस बोनस, आई थिंक दिस कुड बी द फाइट दैट टेक्स इट। दिस वन, या पॉसिबली, बिकॉज़ both guys are knockout artists and Figueiredo is moving up in weight class. I think 125 में उनको वेट कट पे काफी इशू होता था, बट आई थिंक 135 इज द परफेक्ट प्लेस फॉर हिम, क्योंकि आराम से वेट कट भी हो जाएगा। एंड आई थिंक दिस माइट एंड इन अ ब्रूटल वे फॉर कोडी। Yeah, well, I think Cody is a very exciting fighter, and he started off really well as well. In between those उनके knockouts हुए, which didn't look that good for him, but he's come back also. Right, but Davison again is top class opposition, and he may find the going a little tough, though you never know. Yeah, in a 3-round fight anything can happen, क्योंकि जो पेस रहेगा that will dictate how the fight will go, क्योंकि 3-round fight है। if the both guys go all out knockout के चक्कर में, I think we may be in for a। तो उसमें आपका कौन फेवरेट है? डेविसन? So Davison is the bookmakers' favorite, and I think the bookmakers have it right. Davison Figueiredo will take this fight. तो जितने भी, जैसे हमने बताया कि अर्ली प्रीलिम्स और प्रीलिम्स में भी बहुत सारे एक्साइटिंग फाइट्स हैं, सब के सब हम उनके बारे में बात नहीं कर सकते। हम जो अंडर कार्ड में से 2 फाइट्स के बारे में बात करेंगे। एक है हॉली होम एंड काइला हैरिसन, जो आ रही है PFL से। ऑफ कोर्स, क्योंकि हॉली होम काफ़ी लोगों की फेवरेट है। फेवरेट क्यों है, जिस भी वजह से, लेकिन फेवरेट है। और उसके अलावा जिरी एंड राकिच, उनके फाइट के बारे में बात करेंगे। एंड ऑफ कोर्स देन द होल मेन फाइट कार्ड। नाउ Kayla Harrison and Holly Holm. Kayla is the heavy favorite. Kayla is the heavy favorite to Holm. I find personally, मुझे वो सरप्राइजिंग लगता है। जो odds है 1.23 केला को फेवर कर रहे हैं। होम इज 4.5 अंडरडॉग। यू नो, केला इज कमिंग अनडिफीटेड फ्रॉम PFL, प्रोफेशनल फाइटर्स लीग। ये उनकी पहली फाइट है, और पहली फाइट में ही हॉली होम उनको दे दिया। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे माइकल चैंडलर का स्वागत किया था ना ऑल टॉप फाइट्स के साथ। एंड व्हाई नॉट, यू नो, इट्स नॉट लाइक ही इज एन अपकमिंग फाइटर। वो ऑलरेडी काफी। केला हैरिसन इज ऑलरेडी a 2-time Olympic champion. PFL में she ran through the competition, but the only इशू या फिर थोड़ा सा डाउन साइड है केला के लिए, क्योंकि उनको काफी वेट कट करना पड़ रहा है। द फाइट इज एट 135. केला हैरिसन यूज्ड टू फाइटिंग एट 155, सो शी हैज टू कट 20 pounds. आई डोंट नो कितना इफेक्ट होगा उनकी बॉडी के ऊपर। ऑल्दो उन्होंने कहा है कि वेट कट काफी अच्छा चल रहा है, बट 20 pound वेट कट इज नॉट ए स्मॉल डील। प्लस दिस इज द फर्स्ट टाइम इन अ डेकेड दैट शी विल बी कटिंग दैट लो। लेकिन इनके जो फाइटिंग स्टाइल है, आपने केला के कुछ PFL वाले मैचेस देखे थे? यस। तो इनके MMA स्किल्स कैसे हैं ओवरऑल? शी इज वेरी गुड, टॉप, ऑब्वियसली वेरी हाई लेवल कराटे प्लेयर,
आई थिंक द बुक मेकर्स हैव इट राइट, बट अगेन डिपेंड करता है कि केला हैरिसन का वेट कट कैसा चल रहा है. सो वी कैनॉट से अंटिल वी सी हाउ शी लुक्स ऑन द स्केल. इफ शी लुक्स गुड, प्रॉब्ली एन easy fight for her. बट अगर उनको थोड़ी सी भी परेशानी होती है, देन आई थिंक हॉली होम is in for a big underdog upset. Like जो हॉली होम और राउंडा राउजी में हुआ था, nobody expected it. यहाँ पे भी काफी लोग चांस नहीं दे रहे हॉली होम को, बट अगेन अगर वेट कट केला का गंदा जा रहा है. लेकिन आपको नहीं लगता कि हॉली होम के पास वो स्किल्स हैं केला? बिकॉज पर्सनली मुझे ये जो ऑड्स हैं सरप्राइजिंग लगते हैं काफी. ये रियलाइज करना पड़ेगा कि हॉली होम इज 42 years old. सो एज इज ऑल्सो ए फैक्टर हियर, और काफी टाइम के लेओवर के बाद भी आ रही है वो. एंड ऑन द अदर हैंड केला हैरिसन काफी अच्छे जिम में है. शी ट्रेन्स अलोंग साइड आई थिंक जस्टिन गेजी. काफी हाई लेवल कंपटीशन के साथ वो ट्रेन करती हैं. सो आई थिंक द बुक मेकर्स हैव इट राइट, बट इट विल डिपेंड कि वेन्स पे वो हाउ डज शी लुक ऑन द स्केल. ओके, सो द नेक्स्ट अंडरकार्ड फाइट है जिरी वर्सेस रेकिच. एंड ये ऑलमोस्ट इवन ऑड्स पे है. बुक मेकर्स ने इवन किया हुआ है. जिरी है 1.98 एंड रेकिच है 1.90. जिरी को हमने लाइव उस टाइम भी देखा था सिंगापुर में, UFC सिंगापुर में, जहाँ पे इन्होंने टेक्सेरा को हराया था. आफ्टर दैट थोड़ा सा इनके हिस्ट्री के बारे में आप थोड़ा सा लोगों को याद दिलाइए, इनके उसके बाद क्या हुआ है. सो जिरी प्रोहास्का और राकिच बहुत ही इंट्रिगिंग फाइट है मेरे लिए, बिकॉज इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंट्रिगिंग फाइट इन द होल कार्ड आई वुड से. बिकॉज अगर आप रियलाइज करेंगे कि जिरी वाज अ फॉर्मर चैंपियन एंड ही इज फाइटिंग ऑन एन अंडर कार्ड, व्हिच डजंट मेक मच सेंस. काफी UFC फैंस भी उससे नाखुश है. लेकिन UFC 300 में हॉली होम वगैरह भी सब, डेविसन वगैरह सब अंडर कार्ड है. तो मेरे ख्याल से जो डेना वाइट कहने की कोशिश कर रहा था कि ये जो पूरा फाइट है ऑलमोस्ट मेन कार्ड है, जिस भी वजह से, क्योंकि इनको अर्ली प्रीलिम्स करने की वो करनी पड़ रही है और मेन कार्ड. लेकिन इन्होंने बोला था कि हम चाहते हैं कि लोग पहले फाइट से ही देखना शुरू करें. सो जिरी प्रोहास्का जो कि स्लाइट अंडरडॉग है इसमें, जो कि इट मेक सेंस बिकॉज रेकिच का जो फाइटिंग स्टाइल इज वेरी प्रिसाइज. उनको थोड़ा बहुत लाइट हेवीवेट डिवीजन में बोरिंग फाइटर बोला जाता है, बट द रीजन बीइंग ही इज अ वेरी प्रिसाइज स्ट्राइकर. ही डजंट टेक अननेसेसरी रिस्क. स्ट्राइकिंग ऑन पॉइंट है, आउटसाइड वो फाइट करते हैं, पॉइंट्स ही विल कलेक्ट द पॉइंट्स एंड इवेंचुअली डिसीजन विन वो लेके जाते हैं. जीरी का स्टाइल वो नहीं है. जीरी इज अ वेरी वाइल्ड फाइटर. ही स्विंग्स फॉर द फेंसेस. हमने ये जितनी भी जीरी के फाइट्स हुए हैं ऑल वेर एब्सोल्यूट बैंगर्स. जीरी का एक इशू ये है कि बिकॉज अभी रिसेंटली ही गॉट नॉक्ड आउट, सो आई डोंट नो कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल किस लेवल पे है. राकिच ऑन द अदर हैंड ही इज ऑन ए विनिंग स्ट्रीक, और ये 3 राउंड का फाइट है, तो इट कैन गो एनीवेयर. जीरी का एडवांटेज ये होगा कि जीरी हैज टू टेक द फाइट टू राकिच. राकिच का फाइटिंग स्टाइल जो, ही विल ऑलवेज फाइट ऑन द आउटसाइड, ही विल नेवर गो इनसाइड द रेंज ऑफ जीरी. एंड वी सॉ कि जीरी का नॉकआउट पावर क्या है. ही स्लैप्ड अलेक्जेंडर रेस, वोल्कान ओजडीमिर, नॉक्ड आउट ब्रूटली. अलेक्जेंडर रेस का ऐसा हाल किया था कि वो 3 साल तक वो रिकवर नहीं कर पाए थे. एंड द थिंग इज, अगर जीरी टेक्स द फाइट टू राकिच, he will win this. और आई थिंक उनका थोड़ा सा ब्लड भी चल रहा है. दोनों नेबरिंग कंट्रीज से है, बाल्कन कंट्रीज है दोनों. और राकेश ने उनको बोला था कि वो फेक सामुराई है. अच्छा. तो जीरी बोला कि मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट जीरी ने रिप्लाई किया कि अगर मुझे कुछ प्रॉब्लम होता राकेश से, तो मैं उसके देश में जाके उसके घर के आगे नॉक करूंगा. अच्छा. विच वॉज अ वेरी कोल्ड स्टेटमेंट आई फील. एंड जीरी वॉज एब्सोल्युटली जोन्ड इन. फेस ऑफ में भी काफी फोकस लग रहे थे. ही डिड नॉट लूज आई कॉन्टेक्ट. Although I feel like Rakic has a chance, I think Rakic is definitely has a chance, but depends कि fighting style किस तरह से होगा. जो bad blood दिख रहा है, I don't think Jiri will play it safe. I think he will take the fight to Rakic, and if things go well, I see a Jiri stoppage round 3. मुझे जो लगता है कि जीरी का हारना इसमें मुश्किल लग रहा है मुझे, because he doesn't like to lose. Yeah. And उसका जो aggression और skill है, I think that usually, you don't see him. Yeah. You can't visualize him getting knocked out also. Yeah. So Rakic, the thing about Rakic is he's very calm fighter. जैसा मैंने बोला कि he always maintains distance. He will never go unnecessary risk को कभी नहीं लेगा. Yeah. He will never get inside Jiri's range. So Jiri has to take the fight to him. इसमें complications ये है जीरी के लिए कि sometimes he's wild. वो जब swing करते हैं, he leaves open for a counter, जो कि
परेरा ने करा था. So अगर वो उस पे फोकस करते हैं, then I think it's Jiri's fight to lose. Okay. So let's get to the main card. Main card की बात करते हैं. जो पहला फाइट है वो है बो निकल और कोडी Brundage. How do you pronounce that? Brundage. Yeah. And Bo Nickal is the heavy favorite at 1.05. इनका देखा है हमने. जो last fight भी था काफी easy win थी. And he's the heavy favorite here at 1.05. And Cody's at 1300. 13.00, sorry. Yeah. And somebody's feeling lucky. But I don't think, Bo would have to, let's just say this is Bo's fight to lose. Yes. Correct? And my suggestion would be, जब भी आपको इतना बड़ा gap दिखता है, it's always better to avoid it because there's absolutely no value. अगर आप 1000 का अगर आप wager कर रहे हैं तो you will earn 5 rupees, which doesn't make sense at all. However, एक value मुझे दिखा है stake.com पे, जो कि है अगर बो निकल पहले राउंड में जीतते हैं, so the value is at 1.32. So there's slight value there, and I think this is the most probable. Yeah. Yes, I think ये होने के chances सबसे ज़्यादा है. So I think if people do want to wager on this, I think this is the pick they should go with. Okay. So let's move to the next fight, which is Charles Oliveira versus Arman Tsarukyan. Yeah. And Charles Oliveira is the underdog here at 2.80, और Arman है 1.48 पे. Yeah. And a very interesting classic grappler versus wrestler matchup. Yes. Like we said, both are really good on the ground. Yeah. So it might depend on who has better stand-up skills. Yeah. Although, according to me, whenever I look at this kind of fights, it's जब भी एक top level grappler, top level wrestler के साथ compete करता है, I would always like to give the edge to a wrestler. Because fundamentally, Arman is a very high level wrestler. He's good on the feet. एंड अरमान का क्या है कि ही इज ए वेरी डिफेंसिव बॉक्सर एंड चार्ल्स ओलिवेरा राइट टू रश टुवर्ड्स द ओपोनेंट. वो आगे बढ़ना काफी पसंद करते हैं एंड चार्ल्स इज अ वेरी डिफेंसिव बॉक्सर. व्हाट आई सी हैपनिंग इन दिस फाइट इज चार्ल्स माइट ट्राई टू शूट फॉर ए टेक डाउन और आगे फॉरवर्ड फाइट करेंगे एंड ही माइट गेट क्लिप्ड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम बिकॉज इफ द फाइट गोज टू द ग्राउंड ऑल्दो ओलिवेरा इज अ वेरी हाई लेवल ग्रैपलर, Arman can hold his own as far as grappling is concerned. I see जो भी तरह Oliveira has beaten the best of them on the ground. Yes, absolutely. However, Arman is on another level. Amazing winning streak पे है. His only loss came to I think Islam Makhachev, that too 4 to 5 years ago. In this fight, however, I don't see level change मैं करते हुए नहीं देख पा रहा हूँ Oliveira को. Oliveira might take the fight to the ground, but ground पे he is very good. Arman is very good defensively. So I see Arman dodging all kinds of submission attempts. I think a 3-round fight है, तो I would like to go for a decision win for Arman. I think this is his fight to lose. Okay. Although I would like to say कि Oliveira जितनी भी fights उनकी last हुई है, अगर आप पोरियर के साथ देखेंगे, गेजी के साथ देखेंगे, starting round पे it looked like कि Oliveira नहीं जीत सकता, even in the Chandler fight. And then suddenly कहीं से उन matches में भी क्या वो underdog था? Yes, he was an underdog. So that's a very interesting thing to know. Yes. However, if people like to wager on Charles, एक interesting factor ये रहेगा कि winning by submission is at plus 500, 5.0. So maybe people can look at that angle also. Because if Oliveira is going to win, he's going to win via decision or via submission, not decision. अगर ये fight decision जाता है, I fully expect Arman to take the decision win. Okay. Now to the BMF belt. And Justin Gaethje 1.62 versus Max Holloway 2.41. Here, Justin Gaethje is the favorite, but this is a really amazing fight between two really brilliant strikers. Yeah. We've seen them again. This can be unpredictable. We have seen though, Justin Gaethje जब शुरुआत में खेलना शुरू किया, he was a little more wild. Yeah. But then we saw, especially with the Ferguson fight, him becoming a little more tactical. Yeah. Right, and smarter, let's say, and strategic. Yeah. So I think that is what he's bringing to the table now. Also, is it's not just the guy who comes out swinging, and puts it all out there. Yeah. He comes plan के साथ आता है, plan बना के for each and every person, and then they, put that into motion as well. Yeah. So if Holloway was fighting pre-2020 Justin Gaethje, I would pick Holloway in this fight just because of sheer volume. Holloway lands, but Justin Gaethje has evolved a lot. He doesn't throw wild swings. Wild swing बिल्कुल नहीं है.
he puts his weight behind his punches. And एक बात याद रखना हुआ कि while Holloway has the volume, Justin has the power. So Holloway might able to land 5-6 combination लगाएगा, but if Gaethje lands one good powerful shot, it will put Holloway in the back seat. हमने देखा था even against Dustin Poirier fight, it was kind of similar fight. Holloway had the volume, but Dustin had the cleaner punches, the more effective punches. ऐसा पंच था कि whenever he landed, Holloway had to retreat back. So I think something similar might happen with Justin Gaethje. However, it's a 5-round fight, so it ultimately comes down to gas tank. Although I am picking Justin Gaethje to win here, I see two kind of scenarios. If Holloway loads up on volume, if he's also smart, the best way to beat Justin Gaethje is volume pe load and just back off. If he can do that for 5 rounds, I think Holloway can win. But I think Gaethje's power will eventually get to Holloway, and I think we will see first time. For the first time, we'll see. For the first time, we might see Holloway get TKO'd. You think so? Yes. I think it is a possibility with Justin. Yeah. But I think this again, it might be one of the fight of the nights, right? Because this is an amazing fight, and anything can happen. Yes. Now let's move to Weili Zhang, who's at 1.22 versus Yan Xiaonan at 4.70. And I think if I had to say which fight I'm most confident about winning, I think this should be it for Weili Zhang. For Weili. Because Yan is a good fighter. She's on a 2-fight winning streak. She defeated Jessica Andrade and Mackenzie Dern. One has to remember, in that fight, Jessica Andrade didn't look like herself. It was a first round knockout, but I just felt that something was off with Jessica in that fight. Weili Zhang is a whole another level. Her striking is better. Her wrestling is better. Her stamina is better, because we have seen Weili Zhang go full 5 rounds. With Joanna, we saw that with Joanna, we saw that with other fighters. So I see Weili Zhang winning this. I think UFC made this fight because उनको इन दोनों को Chinese market में launch करना था, and they want Chinese market में already launched. I think even a bigger superstar, because Weili is already a big star. I think they wanted to catapult her. But they're undercutting one of them then, no? One of them is. Yeah, I think UFC is thinking this is the cost of doing business for them, because Weili is a more marketable fighter. She is very good. I think if cardio department holds well for Weili, I don't think she should have any problem winning this fight. Now to the main fight of 300, जो बड़ी मुश्किल से इन्होंने करके फिर अनाउंस भी किया था. काफी टाइम तक ये था कि UFC 300 कौन हेडलाइन करेगा, और काफी टाइम तक कॉनर मैकग्रेगर की भी बात चल रही थी, और कल मैंने वो भी देखी है, उसकी फिल्म रोड हाउस. अच्छा टाइम पास अच्छा था, जैसे हम कह रहे थे, and it's become a huge hit on Amazon also. It's a remake of an earlier film. ऐसा कुछ उसमें, लेकिन ऐसा कुछ अमेजिंग वो नहीं है, लेकिन हाँ टाइम पास है. कॉनर मैकग्रेगर फैंस को अच्छा लगेगा. I think he's done a decent job for his first film. अच्छा मजा आया उसको देख के. It's a good one-time watch. Yeah, it's a good one-time watch. So coming to that, so ये Alex Pereira versus Jamal Hill fixed हुआ. Alex Pereira is the favorite here, 1.77, and Jamal Hill is at 2.15. Even though जो Alex है, he's going up in weight. Yeah. So in last fight prior to that, his last fight he defeated Jan Blachowicz, who is a wrestler. Yeah. So that was the basically वो ऐसा fight था कि वो test था कि can he survive in that weight class against non-strikers. Blachowicz is an amazing wrestler. He defeated Blachowicz and then knocked out Jiri Prochazka. So I think we should right now just go out and say he's a full-fledged light heavyweight. And Jamal Hill is obviously coming off of a huge surgery. I mean, he tore his Achilles heel. Wow. So usually what I've seen from experts stating, it takes over a year to recover. Okay. And he's back within 8 months. Yeah. So I'm not sure कि उनका recovery process क्या है. He may have soon taken the fight too early, maybe. However, the thing about कि while Alex Pereira is rightfully the favorite, the best thing about Jamal Hill is his knockout power. Yeah. He possesses the power to knock out Alex Pereira. So Alex has to be very careful.
इजराइल एडिसान्या वाले रीमैच में ही हुआ कि थोड़े टाइम के लिए he lost his focus and got knocked out. And Jamal is a much stronger strike, much stronger, more powerful than Israel Adesanya. So he's also very, और इससे पहले मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, एम प्रिंस पूछ रहे हैं कि भाई जमाल पर पैसा लगा दो क्या? भाई आपके पैसे हैं, जिस पे लगा दो आपकी मर्जी है। लेकिन हमने जो ऑड्स हैं और जो हमारे फेवरेट है वो हम आपको बता रहे हैं। मैं जमाल is a very what's the right word, sneaky, it's like he very unbecoming, you don't before you know it, he's on top of you, on top of you in terms of आप पे भारी पड़ रहा है। That's what he did against Glover. Glover को he pieced up properly and won a decision. So he has the capabilities to beat Alex, because what I feel कि his wrestling is very good, although till now उसको अपनी wrestling को use करने की जरूरत नहीं हुई थी, but that's something he can always rely on. Once, क्योंकि एक बार Alex अपना striking display करेगा, low kicks, kick to the head, range में fight करेगा, he will get frustrated and he will eventually have to turn to his wrestling. But Alex का सीन ये है कि he's been training with Glover and Glover is a world class grappler. So Glover must have planned something out for Alex to counter his wrestling. So that's why I'm kind of confident on Alex winning this fight. But you cannot count Jamal Hill at 2.15. He is a very very live underdog. बहुत अच्छा वो है। एक चीज इसमें कई बार क्या होता है लोगों के लिए, हालांकि हम नहीं बोल रहे हैं कि आप कुछ करो ना करो, लेकिन इसमें जो ऑड्स होते हैं उसमें एक तो होता है जो एक प्लेन होता है कि कौन जीतेगा, लेकिन उसके अंदर जो कोई काफी इंटरेस्टिंग चीजें होती हैं कि राउंड वाइज और कौन से राउंड में और कैसे बाय नॉकआउट या सबमिशन, वो भी, और उसमें ऑड ज्यादा होते हैं। यस, बट वो है कि इट्स ऑलवेज मोर रिस्की। हाँ ऑफ कोर्स, वो तो ज्यादा रिस्की होता ही है, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें 50-50 होता है। यस, करेक्ट, एक ना एक तो जीतेगा, करेक्ट, अनलेस इट्स दैट वन इन अ दैट इट बिकम्स अ ड्रॉ और समथिंग, लेकिन एक ना एक तो जीतेगा। तो लेकिन बाकी उनमें भी ऑड्स काफी इंटरेस्टिंग होते हैं। या सो जितना आप प्रॉप्स पे बेट करेंगे, वेजर करेंगे, उतने चांसेस आपके कम होते जाएंगे, बिकॉज राइट नाउ आपके पास 50-50 चांस है, बट अगर आप जैसे ही कहें कि ये नॉकआउट होगा तो आपका चांसेस 25% और गिर जाते हैं। आप किसी और पे प्रॉप लाएंगे तो और चांसेस गिर जाते हैं। सो द हाउस ऑलवेज हैज एन एज इन दोस केसेस। वो तो चाहते हैं कि आप उन चीजों पे वो करें, इसलिए वो प्रमोशन भी काफी करते हैं कि किसी ने $10 का वेजर किया एंड ही वॉन $1000, so it's always a good marketing for them. काफी लोगों को लगता है कि I can do it, and then you go in a rabbit hole deep inside, and then you try to recover that and you go further deeper hole. So we personally, unless you are absolutely sure, I would always advise against wagering on props. That's what it's called, prop. There's like money line and prop. Prop is basically you are predicting the outcome of a fight in a very specific way. On the other hand, money line is you are outright predicting who is going to win. So it's always better to stick to money line. On certain cases, I do encourage prop wagering. Like for example, if the fight will go over a certain amount of round, because when two wrestlers are fighting, there's a huge chance that the fight either the full 5 rounds or over a certain amount of round. I've had decent amount of luck wagering on props. So whenever I wager on props, I always choose going above a certain amount of rounds. For example, Henry Cejudo versus Merab. Both are wrestlers. Both don't finish opponent very often. So it was very likely that the fight was going over either 3.5 rounds or the whole 5 rounds. So I wagered over 3.5 rounds. Although the odds is not that great, but it's still in your favor. Cool. So that was UFC 300, one of the most exciting, I think, fighting cards. Of course, it would have been even more exciting if Conor had made a comeback. But I think a really, really exciting for me. Though I think I don't know why I feel they should have made Justin Gaethje and Max Holloway the main card. No. Main card. It's the main fight rather. I think it's not a title fight. Actually, yeah, it's a BMF. Yeah. Which is, I mean, but I find that belt बहुत interesting लगता है मुझे वो belt. Because it kind of shows the kind of characters, जैसे नेट डियाज और होरे मासुदाल का जो हुआ था, आपको मालूम है कि ये दो बंदे ऐसे हैं जो कभी पीछे हटते नहीं हैं, एंड सेम विद गैथजे एंड हॉलोवे। तो ऐसे लोग जो हैं BMF बेल्ट के लिए फाइट करते हैं।
तो इसलिए वो जो फाइट है उस बेल्ट का वो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है. बट यू आर राइट, दे कांट डू इट बिकॉज इट्स नॉट फॉर अ टाइटल और एनीथिंग, सो यू नो दे कुड मेक इट द मेन. ओके, cool. Anything else we need to discuss? No, I think that's it for the ठीक है, UFC हम 300. दोबारा आपको बोलते हैं कि पूरा का पूरा जो फाइट कार्ड है, अर्ली प्रीलिम्स एंड मेन कार्ड, पूरा का पूरा आप सोनी स्पोर्ट्स पे देख सकते हैं. इंडिया में अर्ली मॉर्निंग 3:30 से स्टार्ट हो जाएगा. 3:30 बजे अपना अलार्म लगा लेना. 3:30 बजे अगर हॉली होम वगैरह को देखना है, मैं तो उठूंगा जल्दी. I think Davison, Figueiredo and Cody are starting the fight. It has the potential of being the fight of the night. Fight of the night, exactly. तो बहुत ही अमेजिंग फाइट है. तो 3:30 बजे अपना अलार्म लगा लेना. मेरे ख्याल से जो मेन कार्ड है वो 7:30 तक होगा. लेकिन उससे पहले भी UFC 300 के अर्ली प्रीलिम्स और प्रीलिम्स आ रहे हैं सोनी स्पोर्ट्स पे. तो ऑन कर लेना सोनी स्पोर्ट्स एंड देखना भूलना मत UFC 300. That's me, Parveen Abbas, and Abhishek Singh from the MM India show. Cheers.